Dr. Malini Singh, and we stay at Paramount Corn Forest. So when we decided to take a villa, so our first thing what we thought of was also having a lift inside the villa. So we were looking at different options. Actually, I saw it in one of the villas here, and then we actually liked it. But of course, we did a little survey, and when we compared with the other lifts and all, we thought we really found it very useful, especially for a domestic purpose. It takes a very less space as compared to any other lift, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह लगाती है. The installation was very easy, and we didn't have to do much of breaking up of the building or anything. It was quite an easy affair to put it up. That was one big reason. I've been using this for last 8 months now, and I'm very happy with the lift. Good parts are like the electricity consumption is very less as compared, and it's hardly anything. I mean, one thing which we really like is it hardly consumes any electricity. I suppose it is more sustainable than any other lifts which are being offered. And the running is also very smooth. When you land or when it's going up, it's very good for that purpose. We did look at some other options also, but the main reason why we went for Nibav was that it needs very less interference with the building structure. बाकी के जो लिफ्ट्स थे उसमें या तो कुछ रेलिंग्स डालनी थी या स्ट्रक्चर से ज़्यादा ये था. एंड ऑल्सो द वॉल्स डोंट गेट डिस्टर्ब. नहीं तो कुछ लिफ्ट्स होती है जिसमें वॉल में पीछे रेलिंग्स डाल करके उसको अप एंड डाउन किया जाता है, तो वो चीज़ नहीं थी इसमें. दैट वाज वन गुड पार्ट विच आई फेल्ट. एंड ऑफ कोर्स कोई पिट नहीं बनाना था. दैट वाज द बिगेस्ट थिंग, कि उसकी ज़रूरत नहीं थी. कोई लिफ्ट रूम या पिट की ज़रूरत नहीं होती है इसमें. Also, it takes a very less space as compared. आप कोई भी दूसरा लिफ्ट लेते हैं उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा चला जाता है. It hardly takes any space, but it is very spacious. Beauty-wise, it looks very beautiful. It's very attractive. A lot of people have given us compliment on the lift. It is a very attractive feature of our house. काफ़ी जो जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर से ये लोग देखते हैं and then they come and ask कि भाई ये क्या है. तो बहुत सारे लोग पूछने के लिए आते हैं. सफोकेशन का कोई सवाल नहीं उठता बिकॉज इट इज़ ट्रांसपेरेंट, तो आप बिल्कुल बाहर देख सकते हैं. अनदर गुड पॉइंट इज दिस लिफ्ट रन्स ऑन डीजी ऑल्सो, जो ज़्यादातर लिफ्ट नहीं चल पाती हैं. ये मैंने खुद यूज़ किया हुआ है और आराम से ये बैकअप पावर पे चलता है. दैट्स अनदर गुड पॉइंट अबाउट द लिफ्ट. इट्स हार्डली मतलब उसकी नॉइज लेवल बहुत कम है एज कम्पेयर. आप दूसरे लिफ्ट देखिए वो करके आवाज़ करता है ऊपर, पर इसमें ऐसा नहीं होता है. द नॉइज फैक्टर इज नेग्लिजिबल, बहुत कम है. Choosing Nibav was not easy. We had done a lot of research. हमने various pneumatic lift देखे थे, hydraulic lift देखे थे, छोटे साइज में भी लिफ्ट अवेलेबल थे. बट देन अल्टीमेटली वी डिसाइडेड फॉर Nibav. उसके पीछे 3-4 मेजर रीजन था. एक था उसकी एस्थेटिक वैल्यू. इट लुक्स नाइस एंड एड्स चार्म टू द हाउस. देयर इज नो पिट रिक्वायरमेंट, एंड एज माननी सेड अर्लियर, इट डज नॉट डिस्टर्ब द रेगुलर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस. So that was the main reason why we chose it. And of course, उसकी जो economy है in long run, because it consumes very less electricity, was one of the major reasons. In addition to that, the annual maintenance cost is quite reasonable here as compared to the other products that we had seen in the market. Highly recommended product by Nibav.